Yes, my dear friends, welcome everyone. We start with a new chapter, and that new chapter is nothing but carbon compounds. So we'll try to understand the basics behind this, and then as we progress, I'll tell you about what are the different points which has to be considered in this particular chapter. So to begin with the basics. Carbon compounds. Compounds are nothing but all those entities where there are more than one species joined with each other. So there has to be a bond. And इसके पहले क्या लिखा है? Carbon. So that means we are talking about those compounds where there is going to be a presence of carbon. लेकिन hang on. The most important part comes over here is, the most important condition is, that whenever we talk about carbon compounds, please be very clear, the proportion of carbon is going to be high. And that proportion which I am talking about, that should be by means of what? Mass, not by means of number. Then I call these compounds as organic compounds. What I call these as organic compounds. Like suppose if I have the another one, okay, and that is, if I say the proportion is less, then I will call these compounds as inorganic compounds. Okay, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, all these are containing carbon. But the proportion is less by means of what? Mass. यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन का मास है 16, कार्बन का खुद का मास है only 12. यहाँ पर वो सोडियम के साथ है, सोडियम का जब मास की बात करते हैं it is 23. यहाँ पर वो कैल्शियम के साथ है, कैल्शियम का मास है 40. So in spite of the fact that these compounds contain carbon, but then because the mass is less, so it comes under which category? Inorganic compounds. Okay, so I guess the concept is clear. So whenever we talk about carbon compounds, generally, depending upon the proportion of carbon, these carbon compounds are bifurcated into two parts, organic, inorganic. If the proportion of carbon is high in terms of mass, I call it as organic compounds. And ज़्यादा करके वो hydrocarbons है. Hydrocarbon. मतलब compound containing only hydrogen and carbon. Hydrogen ka mass is only 1, carbon ka mass is 12. So one carbon is 12 times heavier as compared to that of hydrogen. So obviously its mass is going to be high, its proportion is high, and therefore it is organic. And where the proportion of carbon is less, it comes about inorganic. So normally now, what we do is, कि जब भी हम लोग कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो by default we are hinting into this particular aspect, and that is what? Organic compounds. Now how to go about as far as the bonding is concerned, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया था कि whenever I talk about this word compound, I am going to talk about what? Bonds. Okay, मैं किसके बारे में बात करूंगा? Bonds के बारे में. Now, in the previous chapter, which was being discussed under metallurgy, and we talk about ionic compounds as well. So, there I told you that ionic compounds, I write it down as IC, their melting point, their boiling point is going to be very high. So, the properties of these ionic compounds were being expressed in terms of ionic bonds. And the ionic bonds are very strong, and therefore the melting point and the boiling point is going to be high. But my dear friends, when I am going to talk about carbon compounds, majority of the carbon compounds are having their melting point, boiling point in a range of only around say 300 degrees Celsius, which is not very high. Okay, so that means this is a clear indication that this doesn't contain ionic bonds. क्योंकि अगर आयनिक बॉन्ड होता तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता, लेकिन these carbon compounds has got lesser boiling point and the melting point. So this is the first evidence to prove कि यहाँ पर जो intermolecular force of attraction है, okay, I use the word intermolecular. अब inter ये word शायद सुना होगा आप लोगों ने,
एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, इंडिया प्लेइंग अ इंटरनेशनल मैच, इंटरनेशनल, ओके, यानी दो अलग अलग नेशन के साथ इंडिया मैच खेल रहा है, ओके, ऐसा नहीं कि इंडिया इज प्लेइंग विद इंडिया, नो, इंडिया इज प्लेइंग विद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज प्लेइंग विद साउथ अफ्रीका, दैट वे. सो इंटर का मतलब होता है डिफरेंट. तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ओके, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन के केस में इट इज वीक. और इसीलिए वीक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो अराउंड से 300 डिग्री सेल्सियस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, एंड दैट्स व्हाई वी से कार्बन कंपाउंड्स मेल्ट और बॉयल एट सच अ लो टेम्परेचर. तो ये उसका पहला एविडेंस हो गया. दूसरा पॉइंट इज अबाउट कंडक्टिविटी. मैंने आपको बोला था आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर. Okay, because it results in the formation of ions when I break this bond. Lekin when I talk about carbon compounds, the carbon compounds are insulators. They are bad conductors of heat and electricity. Okay, simple examples I can give you as urea, glucose. ऐसे सब molecules है, so obviously when it is going to break down, it's not going to conduct electricity. Okay, so they are called as insulators. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बॉन्ड उसका तोड़ेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एटम्स, वी आर गोइंग टू वी आर नॉट गोइंग टू गेट आयंस, वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, एटम्स. एंड एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उनके पास कोई चार्ज नहीं है. चार्ज नहीं है तो एनर्जी नहीं है, बिकॉज चार्ज का दूसरा मतलब होता है एनर्जी, और अगर एनर्जी नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, और अगर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा तो कंडक्टिविटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट कंडक्टिविटी, बिकॉज कंडक्टिविटी इज ऑल अबाउट फ्लो. इट हैज टू गो फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर, देन लेट इट बी हीट और लेट इट बी इलेक्ट्रिसिटी, and therefore we say carbon compounds are nothing but insulators. So these are the basic two evidences which proves that in carbon compounds the bonding is weak. The first evidence is that their melting point and boiling point is less as compared to ionic compounds. So that therefore we say that the bonding is weak. The second thing is the ionic compounds are conductors of electricity, the conductors of heat, but they are insulators. This once again proves that when we break the bonds of carbon compounds, they are not going to give us ions, they are going to give us atoms. Okay, so I hope you have understood now the introduction about what exactly carbon compounds are and how they are different from ionic compounds. Yes? Okay, my dear friends, now I will explain you on the basis of electronic configuration. What is exactly the difference in ionic compounds and carbon compounds, and what exactly type of bond does carbon forms in carbon compounds. So let us start off with, when you talk about carbon, its atomic number comes out to be 6. So its electronic configuration in the valence shell, okay? Because you know very well, only the valence shell participates in bonding. So that is going to be nothing but 2s2 and 2p2. ओके, आप लोग बोलेंगे 2 और 2 4 होता है, इधर 6 लिखा है, ये क्या चल रहा है? अरे लेकिन दोस्तों आगे 1s2 भी है, लेकिन हम लोग ने उसको इग्नोर किया हुआ है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज हाउ मच, 4. अब क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है उसका जो पर्पस होता है, उसका जो मकसद होता है, एंड दैट इज टू अचीव स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसका प्रमाण पत्र क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी द हॉलमार्किंग पार्ट वी कैन से एज फार एज द स्टेबिलिटी इज बीइंग कंसर्न्ड, एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स inert gases. So an element has to achieve that inert gas configuration. So that is a stamp that yes, it has achieved stability. And the electronic configuration of the nearest inert gas. So when you talk about with respect to carbon, the nearest inert gases are two possibilities. Number 1 we have helium, the number 2 we have is neon. Okay, helium has got 2 electrons in its outermost shell. ओके, उसका एटॉमिक नंबर भी 2 है, तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2. नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, सो उसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 and 2p6. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट टू बी व्हाट, 8. अभी आप बोलोगे यहाँ पे 2 और 6 8 है, यहाँ पे 10 है. 1s2 दोस्तों भूलो मत. ओके, सो क्लियर हुआ ये. सो कार्बन को या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करना है, या तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला कंसेप्ट अचीव करना है. So this is what exactly the situation is all about. So what is to be done now is, जब हम शुरू करेंगे for carbon,
ओके, कार्बन का जैसे मैंने बोला यहां पर इट हैज गॉट 1s2 एज वेल इन द फर्स्ट शेल. तो इफ इट ट्राइज टू अचीव द हीलियम कॉन्फ़िगरेशन, ओके, फॉर अ हीलियम कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन हैज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको लूज करना होगा. ओके, एंड इट विल गेट कार्बन 4+ चार्ज. अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इट इज एसोसिएटेड विद अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. और जब एनर्जी ज्यादा होता है, सो ऑब्वियसली द प्रोसेस इज गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, जहां पर भी एनर्जी रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी वेरी हाई. एंड प्लस इट हैज गॉट अ वेरी हाई नेट न्यूक्लियर चार्ज. Okay, so as a result of which, this formation of cation C4+ is not favored. This is if carbon wants to go for electronic configuration of what? Helium. We have a second choice. Okay, second option is carbon has to have a configuration of neon. So in this case, the carbon has to accept 4 electrons and यहाँ पर carbon has got 4-. Once again, that energy is required for what purpose? To overcome the forces of repulsion due to electrons. क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो दैट इलेक्ट्रॉन आल्सो हैज अ नेगेटिव चार्ज. सो नेगेटिव नेगेटिव देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. So to overcome that force of repulsion, large amount of energy is required. Okay, so energy required is going to be large, and once again the process becomes what? Difficult. Okay, and plus once again you can see there is a higher charge. Higher charge is generally not favorable. The lower charge is always favorable. So the higher amount of energy, the higher amount of charge, the conclusion is very clear. The carbon can neither form 4+ or it can form 4-. यानी it cannot form ions. Okay, और अगर ions नहीं बनाएगा तो ionic bonding का सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों. Okay, so what we have to say, in case of carbon compounds, what are we going to say? That is ionic bond not possible. यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है. अभी आप लोगों ने लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा है कि जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की जो तरीका है, 2 है. नंबर 1, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आयनिक बॉन्ड है. अब हर जगह वो संभव नहीं है. सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने अभी है. So when ionic bond is not possible, it is impossible, then there is a possibility of what? Sharing of electrons. And sharing of electrons results in what? Covalent bonding. Okay, so that is what we are going to discuss now under carbon compounds. So for covalent bonding, I'll give you a very simple example. We start off with hydrogen. So when we talk about with respect to hydrogen, hydrogen has got atomic number 1. So it has got 1 electron. So it will go for a inert gas configuration of helium. So it requires 1 electron. Okay, how to get it then? Okay, there is another hydrogen now. Its atomic number is also 1. So this also requires 1 electron. So both of which requires 1 electron. So transfer of electron not possible. My dear friends, transfer of electron is only possible when one of the species gives electrons, the another species accepts electrons. But यहाँ पर both of them requires electron. Then ionic bonding impossible. और सबसे पहला requirement है दोस्तों for formation of a covalent bond is कि covalent bond is formed when ionic bond formation is impossible. You getting me, my dear friends? So what happens is, एक simple तरीका बता देता हूं मैं आपको कि I have a hydrogen like this. उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है विद ऑपोजिट स्पिन्स. अभी बॉन्ड बनेगा, प्यार हो रहा है, प्यार में फासले कम हो जाते हैं दोस्तों, ये आपको अच्छी तरीके से पता है. तो ये दो एक दूसरे के करीब आएंगे. अब एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनका मिलन हो जाएगा. ओके, द वैलेंस ऑर्बिटल्स विल मिक्स विद ईच अदर. ओके, देखो दोस्तों क्या होता है, एक सिंपल सा मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा, सो इट बिकम्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज लाइक दिस. ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है. ओके, मेरा हाथ जो है वो ऑर्बिटल है. Electron is inside the orbital, so it is like this. So the markers are inside my hand, that means the electrons are inside the orbital. Now I want to make sure that the electrons are going to be shared. Okay, that means the two markers has to come close to each other.
Like the two markers has to come close to each other. So it's very obvious, that is, my hands should come close to each other. Then only the markers inside will come close to each other. It's not like this, my dear friends. This is transfer. और मैंने आपको बोल दिया ट्रांसफर इज इम्पॉसिबल. ओके, तो अगर मिलन करना है, दो इलेक्ट्रॉन का मिलन आना है, तो दोनों हाथों को मुझे मिलाना पड़ेगा. अब दोनों हाथों को मैं मिलाऊंगा तब जाकर उसके अंदर के दोनों मार्कर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे. दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दिखाया है, तो वो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा. The orbital of hydrogen, let us make it very clear, hydrogen A, hydrogen B. So the orbitals of HA and HB will mix with each other. It will overlap with each other. And as a result of which, what will happen is the two electrons will pair up. और ये bond बन जाएगा ऐसा. For one bond, there will be one pair of electron. So as a result of which, if I can show it in a different sense also, H, I show by a cross, I show by a dot, and now these two will form a bond like this. और simple structural formula अगर हम बताएं तो ये ऐसे हो जाएगा. This is the way it is formed. So this is the formation of a hydrogen molecule by sharing of electrons. पहले ये इलेक्ट्रॉन ये HA का था, ये इलेक्ट्रॉन ये HB का था, लेकिन जब sharing हो गया, so both the electrons belongs to both the hydrogen, and as a result of which both the hydrogen gets two electrons, and two electrons means आप देख सकते हो, it gets the inert configuration of what? Helium. You understand this? So this is the way of achieving the inert gas configuration. I now give you another option, and that is about oxygen. Now oxygen atomic number is 8. So its valence shell configuration is 2s2 and 2p4. That means it is having 6 electrons. तो दूसरा ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. So O2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? अभी दोनों ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. So both of them requires electrons, so obviously transfer out of question. So when transfer is impossible, what is possible? Yes, you guessed it right, my dear friends. अभी आपको समझ में आ रहा है. Very good. Okay, और वो क्या होगा? Sharing होगा. तो ये sharing कैसे होगा दोस्तों? ये देखिए, ऑक्सीजन है 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक दूसरा ऑक्सीजन दिखाता हूं मैं. ओके, यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है. तो अभी क्या होगा? This will undergo pairing. This will undergo pairing. ओके, और ये बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में शामिल नहीं है. सो इट इज लोन पेयर. तो अभी क्या होगा कि अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पिंक इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ए का था, लेकिन अभी जब शेयरिंग हो गया तो वो न केवल ऑक्सीजन ए का है, वो ऑक्सीजन बी का भी है. सिमिलरली ये वाले जो ग्रीन वाले हैं वो ऑक्सीजन बी के इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अभी शेयरिंग हो जाने की वजह से वो ऑक्सीजन ए के भी है. तो अभी आप देख सकते हो टोटल 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स OA के भी है और OB के भी है, और प्लस इंडिविजुअली OA के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, OB के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. तो 4 और 4 कितना हो गया? यस, कितना हो गया? 8. और देखो 8 है मतलब वो किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन उसने हासिल कर लिया. ऑलराइट, सो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट वी हैव इज ऑक्सीजन. Both the oxygen has got 2 lone pair of electrons and a double bond. Okay, 2 जोड़ी शेयर हुआ है. जितना जोड़ी शेयर होता है उतना बॉन्ड बनेगा. So if there are 2 pairs being shared, so that will be 2 bonds. In this case of hydrogen, there is only 1 pair shared, so that means there is only 1 bond. Similarly, I give you an example about nitrogen. Okay, when you talk about nitrogen, my dear friends, okay, nitrogen has got atomic number 7. So its electronic configuration is 2s2 and 2p3. So it has got 2 and 3, that is it's got 5 electrons. So we show it like this: 1, 2, 3. The second nitrogen also 1, 2, 3, and plus 2 electrons like this. They are called as lone pair. So now when you talk about the bonding part, this is the one pair, this is the second pair, and this is the third pair. So these are all going to be what? Shared. So 3 pairs being shared. So that means how many electrons? 6. Plus individually both the nitrogen has got 2 electrons each. So 6 plus 2, 8. So we can show it very simple. Nitrogen triple bond like this. ऐसा हो गया. Am I very clear with this? So there is one lone pair and there is a triple bond. Alright, so 3 pairs are being shared and therefore results in 3 covalent bonds.
Alright, so I hope you are getting the concept very clear about covalent bonds. So we need to here make it very clear that in carbon compounds, the melting point, boiling point is low. They are insulators. They cannot show +4 charge. They cannot show -4 charge. And therefore, ionic bond formation is impossible. And when ionic bond formation is impossible, I have explained you how does the covalency or the covalent bond formation takes place by sharing of electrons. I am very sure, my dear friends, you have understood all the concept. Yes or no? Oh yes.